Welcome to the Studio of Simplified EGD, your go-to learning space for mastering engineering graphics and design. Next problem statement is, draw and name the curve traced by a point on a perimeter of 60 mm diameter circle. If it rolls by one revolution outside the circle with 160 mm diameter, means there is a circle having a diameter of 160 mm and another circle of 60 mm diameter is rolling outside this circle. Okay, and we have to draw and name the curve traced by a point on a perimeter of 60 mm diameter circle. ये सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा जिसका पाथ हमें ट्रेस करना है फॉर वन रिवोल्यूशन दैट इज़ रिवॉल्विंग आउटसाइड द सर्कल विथ 160 mm. तो ये सर्कल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मतलब वो कोई एंगल कवर करेगा मेजर जो सर्कल का डायमीटर दिया है, मेजर सर्कल है उसके अराउंड. ठीक है, तो वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट दिस एंगल कि वो कितना एंगल कवर करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन डेटा. व्हाट इज़ गिवन? स्मॉल d इज इक्वल टू 60 mm, कैपिटल D 160 mm. Okay, now to calculate this angle, we have equation theta is equal to small d by capital D into 360. So we have small d 60 divided by 160 into 360. Okay, so its answer will be 135 degree. सो यहाँ पे ये जो सर्कल है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तब वो 135 डिग्री का एंगल कवर करेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, टू द बेस दैट विल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट. यहाँ से हम रेडियस जितना डिस्टेंस लेके एक सर्कुलर आर्क लगाएंगे. सर्कुलर आर्क लगा के 135 का हाफ ऑन दिस साइड एंड हाफ ऑन दिस साइड लेके दो लाइन्स ड्रॉ करेंगे. मीन्स 135 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 67.5 डिग्री. तो यहाँ से 67.5, यहाँ से 67.5 लेके दो लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस लाइन दैट विल वर्क एज अ सेंटर लाइन ऑफ अ सर्कल of 160 mm dia. Okay, mark a midpoint, take an angle of 90 degree here, as well as mark 67.5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67.5 means here. Similarly from this side 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 67.5 is here. Okay, now draw lines from here then such a line draw. Okay, now we have to draw the major circle on which our 60 mm dia circle is rotating. Major circle diameter is 160 mm. So take a measurement of its radius, that is 80 mm, half of the diameter. Put your rounder on origin and draw a circular arc. Okay, having its radius r
80. Okay, this is your O point. Then now we have to draw 30 mm dia circle here. So take a measurement of 30 mm. We need to identify first the center point of that circle. Mark 30 mm here. Put your rounder on that point and draw a circle like this. Similarly on this side, put your rounder here, draw a circle like this. Okay, now we have to divide this circle into 8 equal parts. So for 8 equal part, we will draw 90-degree line to this line from the center point. You can also mark 45 for 8 equal parts, but here we are going to use rounder. Mark 90-degree. Okay. Center point and a straight line. Take your rounder, put your rounder here, draw arc. Similarly from this point and this point. Similarly यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, so you do not need to draw there. Intersecting point and center of a circle. Give name O1. यहाँ से ये सर्कुलर एंटिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी. ठीक है, तो पहले अभी ये पॉइंट कांटेक्ट में है. ठीक है, यहाँ पे. उसके बाद ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये. सो यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और ये 8. ठीक है. नाउ पुट योर राउंडर ऑन O. टेक अ मेजरमेंट अप टू 7 एंड और मे बी यू कैन से 1. दोनों एक ही लाइन में आएंगे. 7 and 1. Draw arc. Take a measurement from center point O to 6 number point. That is also pass through point number 2. Now take a measurement from center to 5. That is also pass through point 3. Take a measurement from center O to point number 4. Draw arc. Okay, now here we also need to take arc of this center line, center point of this circle. So long short करके हम पूरा arc बनाएंगे to indicate the center line of that circle. That will be somewhere like this. Okay, now as we have divided this circle into 8 equal parts, we need to divide this angle into 8 equal parts. Okay, so we have already 2 divisions. Now we will bisect this. That will divide into, bisect this and this, so it will divide into 4 and 4, 2 and 2, 4 equal parts. Then again we will bisect that angle, this angle, this angle and this angle, so we will get 8 equal parts. Draw a small arc here like this. Put your rounder on this point. Draw first arc, second arc. Similarly from this side, arc on this point from here. Draw a straight line up to center line. Similarly from this point to center line.
Again we will bisect these 4 angles by same method, same measurement. Extend the line from center O to the central line. Now give the name here O0. This will be O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 and O8. Now take a measurement of the radius of this circle O0 to 0. Okay, put your rounder on O1, draw arc on 1 number line. Here is your 1 number, so this arc line is called as 1 number line. Put your rounder on O2, draw arc on 2 number line. Put your rounder on O3, draw arc on 3 number line. O4 to 4 number line. O5 to 5 number line. O6 to 6 number. O7 to 7 number line, and O8 will be here. Give the name to each point: P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 एंड P8. यहाँ पे हमने सर्कल के 8 इक्वल पार्ट किए. इसकी जगह पे हम 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो कर्व की एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी. तो हमें ये वाले जो 8 डिवीज़न की है उसके भी 12 इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे. अगर सर्कल को 12 इक्वल पार्ट किए हमने तो ये भी 12 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे. नाउ ड्रॉ स्मूथ कर्व फ्रॉम ईच पॉइंट्स. यहाँ पे ये स्मूथ होगा. Okay, it will be like this. Give the name to the curve. This is our Epicycloid. Okay, for tangent and normal to the curve, take any point M on the curve. Okay, M point is in between P3 and P4. So center of this M point on the curve is in between O3 and O4. Okay, so take a measurement of radius of small circle, put your rounder on M, draw arc on a center line. Here it might be cut here somewhere. Okay, connect the line from center to OM. गिव नेम OM. यहाँ पे ये लाइन कट करेगी. ज़ीरो वाली जो लाइन वाला आर्क है वहाँ पे ये लाइन कट करेगी. उसको नाम देंगे N. N और M में से पास होती हुई लाइन हमें देगी N डैश नॉर्मल. And perpendicular line to this line from point M. Mark 90 degree here. And draw a line from that point and M point. Okay, that will give us T dash tangent. Okay, this is our epicycloid. Hypocycloid. So problem statement will be like this. Draw and name the curve traced by a point on a periphery of 60 mm diameter of circle. एक सर्कल है जिसका डायमीटर 60 mm है. ओके,
और उसकी पेरीफेरी पे कहीं पे कोई पॉइंट है जिसका पाथ हमें ट्रेस करना है, और कंडीशन क्या दी है, इफ़ इट रोल्स बाय 1 रिवोल्यूशन इनसाइड द सर्कल विथ 160 mm डायमीटर। एक और सर्कल है जिसके अंदर की ओर ये सर्कल पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब जब वो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कुछ एंगल भी कवर होगा, ठीक है। वी विल आइडेंटिफाई दिस एंगल बाय सेम मेथड, वी कैन कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट given data. What is given? Small d is equal to 60, capital D is equal to 160. We can calculate this angle by theta is equal to small d by capital D into 360, that is equal to 60 by 160 into 360. Your answer will be 135 degree. Okay, so here the covered angle is 135 degree. We will draw baseline, then center line, then half of 135 on this side and half of 135 on this side. We are going to measure and plot two lines. Then after, by taking the radius of 80 mm, we will draw this circular arc. Then after, we will mark center point of this circle by keeping the 30 mm radius and draw a circle. Okay, let's start. First of all, draw a baseline. Okay. We will consider this line as a center line of circle, the major diameter, circle with a major diameter. Take one point as your base point, midpoint, center point of circle. Now take a protractor, measure 90 degree to indicate a center line, as well as 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67.5, as we have to measure 135 degree. Okay, 135 divided by 2, 67.5. So यहाँ से 67.5 on this side as well as 67.5 on this side. दोनों पॉइंट मार्क करो, हर एक पॉइंट में से पास होती हुई लाइन. Now take a radius of 80 mm. Radius of 80 mm. Put your rounder on the base point. Draw a circular arc. This will be of R80. Okay. Now we have to draw circle inside this perimeter of this circle. Okay, because our circle is rolls inside this 30 mm radius. मेजर करो, यहाँ से मार्क करो उसका सेंटर पॉइंट. Similarly from this side, mark center point, put your rounder on center point and draw a circle. On same on this side. Divide the circle into 8 equal parts. 90, you can take 45, similarly 45. Okay. सेंटर से जो हमने पॉइंट मार्क किए वहाँ से पास होती हुई लाइन, सेंटर एंड दैट पॉइंट, that will divide the whole circle into 8 equal part.
अभी ये पूरा ऐसे रिवॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले अभी कांटेक्ट में ये पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर ये। तो नंबरिंग हम वैसे देंगे 7 and 8, ठीक है। नाउ टेक योर राउंडर, लेट्स गिव नेम O, टेक अ मेजरमेंट फ्रॉम O to 1। यहाँ पे भी 7 और 1 नंबर एक ही लाइन में आएगा। पुट योर राउंडर ऑन O, टेक अ मेजरमेंट अप टू 6 number point and draw arc that will pass through the point number 2. Similarly, measure from point number 5, your arc will pass through the point number 3. Similarly for 4 number point, draw arc. Okay, as we have divided this circle into 8 equal parts, we have to divide this angle of 135 degree into 8 equal parts. Okay, so we are considering this is as our initial arc. We will bisect this angle. Okay, put your rounder on first point from here, mark from here. Similarly from this side, mark from here and mark from here. So here we have divided this angle into 2 equal parts. Similarly this angle to 2 equal. ये लाइन कहाँ तक ड्रॉ करनी है? So उसके लिए we have to extend our center point from here to here. So draw the center line from this center point. Let's give name O0. Okay, so measure O to O0, draw center line from there, long short, long short. Okay, we will extend this line up to that point. Now we have 4 division, 1, 2, 3 and 4. We will bisect these all angles by same method. Put your rounder on this point, draw arcs from here and here like this. So ultimately we have divided the whole angle into 8 equal parts. ये हो गया 8 equal parts. हर एक पॉइंट में से लाइन एक्सटेंड करो अप टू दैट सेंटर लाइन. Give name to its center O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 and O8. Done. Now we will follow the same method as done earlier for epicycloid. Take a measurement of radius of a smaller circle. Put your rounder on O1 and mark on 1 number line. Here your 1 number line here. Mark on 1 number line. O2. देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर है तो आपका कर्व ऐसे बनेगा. ठीक है. सो यहाँ पे जब हम O1 पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ पे हम मार्क ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. तो हमें पता है कि कर्व ऐसे बनेगा. सो वी हैव टू मार्क लाइक दिस. ओके. सो ये जो पहला मार्क किया वो गलत है, ऐसे नहीं करना है. ठीक है. रेडियस का डिस्टेंस मेज़र करो, O1 पे रखो, 1 नंबर वाली लाइन पे ये डायरेक्शन में आर्क लगाओ. O2 पे रखो, 2 वाली लाइन, मार्क ऑन दिस साइड. O3 पे रखो, 3 वाली लाइन पे आर्क लगाओ.
O4 पे रखो, 4 वाली लाइन पे आर्क लगाओ लाइक दिस। O5 पे रखो, 5 नंबर वाला आर्क जो है लाइन उसके ऊपर आर्क लगाओ। O6 पे रखो, 6 वाली जो लाइन है उसके ऊपर आर्क लगाओ। O7 7 वाली लाइन पे आर्क लगाओ। O8 यहाँ पे आएगा, ठीक है। हर एक पॉइंट में से पास होता हुआ कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक एरर हो गई है जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है वो ये जो सर्कल की लाइन है सेंटर लाइन उससे बाहर की ओर आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली आप जब कर्व ड्रॉ करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट में से पास होता ये यहाँ पे ऐसे सक्सेसिवली थोड़ा इनसाइड होगा, पूरा कर्व ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इतने सारे आर्क्स होंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर कि कौन सा पॉइंट हमने मार्क किया था। हर एक पॉइंट को नंबरिंग दो, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और ये P8 लास्ट वन। ओके, कर्व को नाम दो। कौन सा कर्व ड्रॉ किया हमने? हाइपोसाइक्लोइड। Now for tangent and normal to the curve, take any point M on the curve. Let's take point M is here. ठीक है, M पॉइंट यहाँ पे, इसका सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है तो रेडियस जितना माप लेना है, M पॉइंट पे रखना है, सेंटर वाली जो लाइन है उसके ऊपर आर्क लगाना है, ठीक है। ये जो सेंटर लाइन है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो हमें पॉइंट एक्चुअली क्या है वो कहाँ है वो मिलेगा। ये पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे सेंटर के साथ ऐसे, ठीक है। ये जो एंड लाइन है, एंड आर्क है 4 नंबर में से, वहाँ पे ये जो OM वाला पॉइंट हमने मार्क किया दैट विल इंटरसेक्ट समवेयर हियर, सो इसको N नंबर नाम दो, ठीक है। पर यहाँ पे बाकी सब कर्व में क्या करते थे कि नीचे वाला ये जो आर्क है वहाँ उसको ऐसे करके M में से कनेक्ट करते थे और नॉर्मल बनता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बेस वाला पॉइंट है, बेस वाला पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे सर्कल हमारा टच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा बेस पॉइंट होगा, ना कि ये 4 नंबर वाला। तो हम यही जो लाइन है NOM और उसको एक्सटेंड करेंगे, वो जो बेस पॉइंट वाला बेस लाइन है उसको वो टच करेगा, जिसको हम नाम देंगे N1, ठीक है। फिर वो N1 और M में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे जो देगी हमें N1 N1 डैश। ये होगी हमारी नॉर्मल लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड परपेंडिकुलर लाइन टू दैट, from M point will give us T dash tangent to the curve 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा, वी हैव टू एक्सटेंड दैट लाइन अप टू द बेस ऑफ मेजर सर्कल। ओके, मेजर सर्कल जहाँ से ड्रॉ किया है 80 की रेडियस लेके, वहाँ से हमें नॉर्मल पॉइंट मिलेगा, नॉर्मल का एक पॉइंट मिलेगा और वहाँ से M में से पास होते हुए नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। एंड परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट।